Do Mastane is presented by Ocloo, Reimagine Entertainment. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप क्यों हंस रहे हैं? ये शो शुरू हुआ है और ये हंसना शुरू हो गए हैं यार। ये मनीष ने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से मैं I'm just laughing my ass off right now. Anyways, welcome to our show, Do Mastane, presented by Ocloo, a market-leading AI-powered platform provider based in Dubai. Damn, that sounds dangerous. Thank you for sponsoring our show. Much. आप कह रहे थे कि ये जो पॉट स्मोकिंग है ये आजकल बहुत हॉट हुआ है. पॉट इज हॉट. Hot is pot. Pot is hot. हॉट पॉट. खैर, एक और चीज जो हॉट है आजकल, और मैं शायद पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस की आजकल सबको. Oh no, are we going to talk about body shaming again? No body shaming, no working out. The biggest thing right now is something called superfoods. What? कुछ फूड्स हैं दुनिया में, बाकी सब नॉर्मल ऐसी छोटे गरीबों का खाना है वो. गरीबों का खाना है. But then there's superfoods जो सुपर हीरोज हैं फूड्स के. अच्छा. The first one that people love talking about and eating is seeds. Seeds? और उसकी भी पता नहीं कितनी किस्में भाई. फ्लैग सीड है, चिया सीड है, हेम्प सीड है, अजीब अजीब से नाम रखे हैं. Hemp seed? हाँ यार, मैं तो समझता था कि seeds are used by farmers ताकि वो उसको सॉइल में डालें और वो फसल निकालें. हाँ, फसल निकालें. अगर सारे सीड हम खा लेंगे तो हमारे अंदर से उग रहा है ना वो. फार्मर्स क्या खाएंगे भाई? अच्छा, फार्मर्स क्या उगाएंगे? अच्छा. नेक्स्ट अप इज टोफू. ये भाई ये क्या, ये प्लास्टिक नुमा, ये लगता है पनीर का मजा आप निकाल देना. पनीर से आप सारा फ्लेवर निकाल दें, वो टोफू बन जाता है. इट्स लाइक a little jiggly piece of cardboard that you cook and you eat. Can you eat with your salad or with your whatever? It's a super. You can cook it anyway. Yeah. आप सादा भी खा लें. No, there is people that put it in salad, man. But tofu ka salad. It tastes like nothing. Is that what it tastes like? हाँ. अगर आपने nothing खाया, beautiful savory taste of absolutely nothing, like air, like plastic. हाँ. फिर एक और सुपर फूड मैं आपको बताऊं, वो है ग्रीन्स. Oh shit. हरे. सबको आजकल ग्रीन्स की लत लगी हुई है. Martians बन जाएंगे, we're gonna turn green. वो ग्रीन भाई, ये आप बकरों को खाने दो. हाँ भाई. गाय को खाने दो ताकि वो खाएं और हम उनका बीफ खा सकें. आप बेचारे गाय बकरों का खाना भी खाने लगे. यार कभी कभार तुम कुछ ऐसी बात कर लेते हो ना जो कि यार मैं सख्ते में चला जाता हूँ यार. आप ये बताएं, फेयरनेस की बात ये नहीं कि हम बकरों का खाना खा रहे हैं, गाय का. अब गाय वो छोड़ के हमें खाने लगे हैं. हमारे खाने, वो किचन में आके हमारे गोश्त वोश्त को खाने लगे. हमें कैसा लगेगा? Pig is beginning to talk, horses beginning to fly, guy are beginning to eat humans. I've got a couple of more superfoods for you. Avocado का तो जो क्रेज है आजकल. यार लोग ये बेचारे है क्या है? ये मुझे लगता है वो आम का अफ्रीकन कज़न है. यार जब लोगों के पेट में let me sum it all up. जब लोगों के पेट भरे हुए होते हैं ना, ये ऐसी बातें करते हैं. मेरा पेट इस वक्त बहुत खाली है. I could eat 10 avocados right now if you gave them to me. ये टेबल आपको नजर नहीं आ रही, but it's green. It looks like an avocado from the inside. What the hell is an avocado, man? It's filled with nutrients and antioxidants. It's filled with vitamin C. It's filled with green stuff. Right. Green jelly stuff. It's really disgusting. वो सुपरमैन का क्या होता था? ग्रीन? Oh, kryptonite. Yeah, it's kryptonite. It's like it's healthy kryptonite. हाँ. But it's good for you. Anything that's good for you will always taste like crap. Yeah, so anything that has super next to it will taste like crap. But apparently, the last one, which is really, really good for you, and this has been around for a very long time. I was just gonna say, nuts. Nuts. आप क्या कहने वाले? मैं ये कहने वाला था कि यार ये जो टोफू के बारे में तुम बात कर रहे हो, ग्रीन्स के बारे में, यार ये लोग तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे. Maybe 20 years ago, man, they started doing this stuff, didn't they? हाँ, नहीं, but nuts have been around for centuries. Oh, that's true. Almonds, ये अपना पिस्ते, बादाम, ये अपनी काजू वाजू जो होता है ना, ये हालांकि बहुत आयरन है भाई इसमें. स्क्विरल्स खाते हैं वैसे. स्क्विरल्स खाते हैं. आपको स्क्विरल जैसा बनना है तो आप खाइए nuts. Go nuts on nuts. Just go nuts on nuts and become like a real rodent. But apparently, superfoods is huge. Yeah. आप अगर YouTube पे चले जाएं and type superfoods, you'll get more videos and more views of that than anything else these days. मतलब लोग हमारा शो नहीं देख रहे इतना जितना ये सुपर फूड्स के ऊपर. तो यार हमारा जो शो है उसकी तो बात ही मत करो. लेकिन as far as your super foods are concerned, honestly, look,
Abdullah, look, man, if you can be healthy, and if that is being promoted now and it's become a fad, I think that's a great fad, don't you? Fat? Fad. Oh. Okay. Did you say fat? I did. Did I call me say fat on air? Because I'll tell you something. You can't say fat around here because I'm telling you, man, you will be shot down by some AK-47 or some 12 gauge or something. नहीं, मैं तो बस आज बात ही फैटनेस पे करूंगा. अच्छा. क्योंकि ये जो फैट है ना, तोंद भाई, हमारे जैसे तोंद कहते हैं. अच्छा. वो भी बड़ी खतरनाक चीज है. मैं तो अपने आप को फूक रहा हूँ बस. तो ये सुपर फूड्स आप खाइए. अच्छा. Because having a तोंद is not an option. तोंद जो है ना, ये आप बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं. कि आओ डायबिटीज, आओ मेरा ये देख रहे हो ना, तो यार आओ बैठ जाओ, इसके अंदर घुस जाओ. तुम्हें नहीं लगता कि अब जैसे गीता में भी होगा, कुरान में भी है, मतलब हदीस में, कि आपकी बॉडी जो है आपकी टेंपल है, ठीक है ना, आप उसकी एक डिग्निटी है, इंटेग्रिटी अपनी एक बॉडी की. तो जैसी भी बॉडी है, आपको उसको वो लव करना चाहिए, उसको आप लव करें, इश्क करें आप अपने बॉडी से. लेकिन आपको जब डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और वो क्या क्या बीमारियां होंगी, जो हार्ट डिजीज, 80%, 80% ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय तोंद, फैट अराउंड द वेस्ट. बहुत से लोग ऊपर से नीचे से भी होते हैं, लेकिन फैट अराउंड द वेस्ट इज स्लो पॉइजन. इट्स टॉक्सिक टू योर बॉडी. और मुझे इस पे वो पता नहीं, आपने देखा होगा, वो एक कॉमेडियन है, जाकिर हुसैन नाम है. जाकिर हुसैन, ही इज अ फनी गाय, मैन. He did a little segment on tond. Really? There are 3 stages of losing weight or having tond. Okay. पहला तो ये होता है कि भाई you're in denial. आपको किसी ने कहा यार ये तुम्हारी तो तोंद निकल आई है. नहीं. कहाँ है भाई? दिखाओ मुझे जरा. ये भाई की तोंद नहीं, ये पेट है मेरा. एब्स नजर नहीं आ रहे तुम्हें? मतलब मुझे तो नजर नहीं आ रही भाई. वो असल में 2 दिन से पॉटी नहीं की मैंने. फूल गया होगा पेट. इट्स नॉट तोंद. आजकल कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा मसला है. The second stage, he says, is acceptance and action. कि भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया कि yes, I have a तोंद. मैं अब जिम जाऊंगा रोज 10 घंटे, सलमान खान की तरह और शाहरुख खान की तरह मैं वर्कआउट करूंगा. और मेरे 12 पैक निकल आएगा. 24 पैक. फुल पूरा बॉडी जो है एकदम एक पैक बन जाएगा. फिर असल में होता है 2 हफ्ते बाद you give up. You come home and your wife says, ये क्या हुआ, आपकी तोंद तो अभी तक वही है. फिर वो आ जाता है कि भाई so what? क्यों भाई, तेरा बाप का खा रहा हूँ मैं. This is how he said it. तेरे बाप का खा रहा हूँ. मेरा पेट है, मैं जो चाहूँ करूँ. क्या इसको कहते हैं? Sixth sense? No, sixth nerve. छठी भी नस. Right? Yeah, sixth. Someone has stepped on some nerve, man. What's going on? Why are we even? Somebody has stepped on my tond. On your tond? Yeah. Are you kidding or are you being serious, man? Yeah, देखें. From here I can hardly see you, Abdullah. That's how thin you are. नहीं, वो तो मैंने असल में वो अपना वो बॉडी सूट पहना हुआ है. अच्छा. Anyhow, नाज़रीन, अब हम बात करेंगे. आपको ये सेगमेंट पसंद तो नहीं है, लेकिन we have to address it. पाकिस्तान पे नजर डालेंगे हमारे हारून कुरैशी उर्फ मिस्टर कढ़ाई. कितने मजे से कह दिया कि आपको ये सेगमेंट पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी. लेकिन नहीं, प्लीज बताइए, पाकिस्तान में ब्लैकआउट के पे 2 जुमले. ब्लैकआउट जो हुआ है ना, मुझे ये, I don't know if you guys are aware of the term electromagnetic pulse or the EMP. It's a very dangerous technology that has been established. Okay. China's using it now, I think. America's using it. A lot of people are saying that blackout that happened in Pakistan, there was a little bit of an EMP action going on over there. People's cars are out in the street, the batteries just run right out. Nothing works. Now, I don't know, I'm going to take a different angle on this, Abdullah. I think that Pakistan was just used as a guinea pig, as an example, simply because of its state in affairs right now. They're so bad that you can have a foreign country come in and use it and produce an EMP there in Pakistan, and no one's going to even, So kya, matlab, what were they trying to achieve? I think we just wanted to test their own technology and use it on all of Pakistan. So from the northern tip of the KPK right down to Karachi, everyone's out of power. No one's got any power for about 12 hours to 24 hours. No one knows what the hell's going on. They're running around like with chickens with their heads cut off. But this lasted, what, 2 days? Not 2 days. Actually, if it would have been 2 days, it would have been a big story. But it lasted about 12 to about 16 hours. Oh. And people started getting their power back. See, the thing is, man, it's not just that power outage, man. Just 2 days ago, the bomb blast in Peshawar, man, the Mastane, killed over 100 people, man. Afsosnak. Right? I don't want to keep saying this, man, but there have been really big bomb blasts in Pakistan's history.
And it always seems to happen when there seems to be a lot of political turmoil or political turbulence. Why is it that at that very moment, a big bomb blast? Remember Marriott, man, in Islamabad when that blew up? Yeah. 2005 or 2000? No, I think it was 2008. I think it's 2008. Yeah, correct. But the point is that started happening when there was a lot of friction in politics in Pakistan. And all of a sudden, there's a bomb blast. I'm not pointing any fingers, man, but I'm just wondering why. Finger to aap point kar rahe hain. I am pointing a finger. Ain't I pointing a finger? But I'm not pointing at anyone particular, man. But isn't there always friction in Pakistan? Yeah, there's always, but that's man-made friction, man. That's manufactured friction. This isn't natural friction we're talking about, Abdullah. This is stuff that happens for 75 freaking years. 75 years there's been friction in Pakistan, and it was designed to do so. Because I don't want to get into that right now. एक मिनट में समेट दीजिए अपने. I just want to say that it's because of our political and our economic situations that we're in right now that bombs are going off in mosques in Peshawar, that, you know, the middle class is no longer the middle class. It's non-existent. People can't find food to eat. You know, you're riding your bicycles to work now because you can't put fuel into your cars or into your motorcycles. Now, if you think that this all happened naturally or organically, it didn't, folks. And I'll get into that. I mean, that's a very cryptic message. It's a very sort of a cryptic message that I'm इशारों में पता नहीं इशारों में बातें कर रहा हूँ. ये बाद में हम इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे. Philhal, this is the situation that we're in right now. It's very bad what happened with that bomb blast. 100 people, and you know what? They were all police people, man. Not all of them, but most of them were of the police force. So बस हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह खैर करे, जो लोग चले गए उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं. बिल्कुल, the families they've left behind, अल्लाह absolutely, उनको 100%. अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. The blackout again is a sad story. It's almost like it's metaphorical कि पूरी पाकिस्तान इस वक्त darkness में है. क्या ज़बरदस्त बात की है. पूरा पाकिस्तान इस वक्त, और to a certain extent the whole world. The whole world, but since we're focusing on Pakistan, but we're using Pakistan as that example for the whole world, right? चलिए अब हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे अगले सेगमेंट शाइन विद शिमजी के साथ. कहीं जाइएगा मत. Please make sure you watch. The Mastane is presented by Ocloo, Reimagine Entertainment. Assalamualaikum everyone, this is Shimzee. I'm here for another episode, and today's topic is how to love yourself. Trust me, that's my favorite topic among all. जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते. लव योर सेल्फ के लिए अगर मैं 1 घंटा भी बोलूँ तो कम है. लव योर सेल्फ इज द बेसिक की टू लिव हैप्पी. लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए. आप जैसे भी हैं, जैसे भी जिस हाल में भी हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं. अगर अल्लाह मियाँ ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो यकीनन कुछ ना कुछ करने के लिए ही भेजा है, या आप में ऐसी कोई खूबी होगी. अगर आप में कोई कमी भी है, कुछ है भी, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है मुझ में ये कमी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुझे नेमतें और बहुत सारी क्वालिटीज़ भी दी हैं जो शायद किसी दूसरे में नहीं है. आप भी उतने ही खूबसूरत हैं. आपके अगर बाल अच्छे नहीं है तो आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है. आपकी आंखें अच्छी नहीं है लेकिन आपके होठ बहुत अच्छे हैं. तो यू हैव टू कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ दैट व्हाटएवर यू आर द बेस्ट. आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने आज अपना बेस्ट देके आप इस पार्टी में आए हैं और आप सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसे मोड़ पे आपको ये लगे कि कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, उससे डिस्टेंस कर लीजिए, उस तरफ ना जाइए. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए. आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई आपको लेट डाउन कर रहा है, वो उसका काम है. आपको यहाँ पे कैसा स्टैंड लेना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. खुश रहिए. अपने आप पे हमेशा ये भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं. अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला को अप्रिशिएट कीजिए कि उसने मुझे बनाया है तो ऐसे तो बनाया नहीं है. आप किसी को देखते हो तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको देख के अपने आप को कंपैरिजन ना करें. वो अपने लेवल का अच्छा है, आप अपने लेवल के अच्छे हैं. तो प्लीज हैव सो मच कॉन्फिडेंस इनसाइड यू.
जब आप पे कोई मुश्किल आती है, उस मुश्किल को आप ऐसे ले सकते हैं कि ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए लिया है, जिसको मुझे बहुत अच्छे से उसको फिल करना है, उस एग्ज़ाम को मुझे पास करना है। बट किसी भी चीज़ में आपको ये नहीं सोचना कि ये सारी मुसीबतें मेरे पास हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास थोड़े से गम आ जाते हैं। उस गम में आपको हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, और प्लीज़ मेक श्योर कि आपके ये माइंड में है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सबसे अच्छे हैं, और अल्लाह मियाँ ने आपको सबसे अच्छा बना के भेजा है। तो प्लीज़ हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, अपने फॉल्ट्स को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, दुआ में हमेशा याद रखिए और यूँ ही प्यार करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। रोजी, रोजी। जी सर। यस सर। हाँ, वो पेन एंड पेपर रेडी है? यस सर। एक लेटर लिखवाना है। सर कौन सा लेटर? A B C D या E? अरे नहीं, वो लेटर नहीं, खत लिखवाना है। खत अपने दोस्त क्रिस को। सर किसको? किसको नहीं रोजी, क्रिस को, माय फ्रेंड क्रिस। लिखो, डियर क्रिस। सर कौन सा वाला डियर? वो हिरन वाला डियर या फिर वो महंगा वाला डियर? अरे वो नहीं, वो जो उर्दू में कहते हैं रोजी, प्यारे क्रिस। प्यारे क्रिस। सर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है क्रिस सर तो इतने प्यारे नहीं हैं। उफ़्फ़ो रोजी, दिमाग मत खराब करो, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। सर अब ये जो सर कहाँ से बीच में आ गए? अभी तो आपने बोला प्यारे क्रिस को लिखने को। जो? अरे क्रिस को लिखना है, क्रिस को। किसको? लिखो लिखो। किस? डियर क्रिस, I'm afraid I won't be able अफ्रेड? हाँ है सर, मेरे होते हुए आप अफ्रेड कैसे? अफ्रेड हुआ आपकी दुश्मन? Oh God, Rosie, you are driving me nuts. सर कसम से ड्राइविंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन नट्स मेरी ड्रॉर में पड़े, आपके लिए लेकर आऊं थोड़े से? हाँ जाओ और वहीं बैठो, वहीं बैठी रहना। I will do this myself. मैं खुद लिख लूंगा। कर ही ना लें, खुद ही। Please, out. ओके ठीक है। क्या दिमाग खराब कर दिया। रोजी, यस सर। वो डियर के स्पेलिंग क्या होते हैं? सर कौन सा वाला डियर? वो हिरन वाला डियर या फिर वो महंगा वाला डियर? Do Mastane is presented by Ocloo, Reimagine Entertainment. जी, welcome back, नाज़रीन और हज़रात, to Do Mastane presented by Ocloo, Reimagine Entertainment. Thanks once again, Shimzee, for that lovely fantastic segment you gave. और वो skit भी पता नहीं कौन लिख रहा है ये skit, हमें बड़े दिलचस्प लग रहा है। देखें, कौन लिख जो भी लिख रहा है ना, बहुत ही बकवास, बहुत ही घटिया किस्म की वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स मतलब उसमें वो लिखे हुए हैं। तो Shame on him. You know, बेशक आप मतलब मत देखिएगा, क्योंकि I think you'll all be worse for it. हाँ, खैर अभी हम अपने अगले सेगमेंट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट बात करना चाह रहा था ये सेग्रीगेशन पे। आजकल शादियों में, पाकिस्तानी इंडियन शादियों में, खासतौर पे कनाडा अमेरिका में सेग्रीगेशन होने लगा है। भाई दिलचस्प, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आई जस्ट वांट टू से 2 थिंग्स। आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस, या एक क्वेश्चन कि भाई सेग्रीगेशन का मकसद ये है कि भाई औरतों मर्दों को अलग कर दिया आपने, ये सोच के कि भाई वो पर्दा है इस्लाम में। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हज पे जब हम जाते हैं तो वहाँ मर्द और औरत एक साथ तवाफ कर रहे होते हैं, एक साथ इबादत कर रहे होते हैं। जब सेग्रीगेशन वहाँ नहीं है तो ये आपने शादियों में जो ये सेग्रीगेशन का, you know, it's almost a hoax. Okay, I listen, honestly, I cannot give you a factual statement, but I can give you my opinion on it, or at least the feeling that I have about it. Abdullah, I think Hajj and Umrah, you know, that's a separate part of Islam. Yeah, no, but right? the point I'm making, that's an example. But in Hadith and Quran, it does say that, you know, Naam-e-haram, sorry, the 2 hukum, there should be. हाँ, हुक्म ये है औरतों का पर्दा and मर्दों की नजरें नीचे. Right. That is all that God has said. These are the 2 things you have to follow.
अब आप वो जिनको फॉलो करना है हाँ वो ये सही है, ये बात सही है, वो बिल्कुल ठीक है। किसी शादी में बैठ के भी करेंगे और जिनको नहीं फॉलो करना है वो हज के दौरान भी नहीं करेंगे। That's true. तो डोंट मेक इट अ बिग डील एंड डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन मैं इन चीज़ों में थोड़ा बिलीव नहीं तो करता कि भाई तुम्हारी फीलिंग ये है कि this whole thing about segregation, this is just an attempt by चंद लोग हाँ that are trying to look for too much popularity भाई and are kind of using extremist type I philosophies. honestly I think it has an adverse effect कि होता ही है कि भाई segregation के आप महफिल में पहुंचे फिर लोग जो है ना हॉलों से निकल के हॉल में वो कर्टन के बीच में आ जाते हैं, बीच में जहाँ बफे कार्ड लगी हुई तो वहाँ फिर मिंगलिंग शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल I said it's a topic that could It's an take amazing a whole topic and we can have कभी a whole और कवर episode on करेंगे। it. हाँ। अब हम चलेंगे अपने दोस्त मनीष के साथ अगले सेगमेंट पे जो आज हमें अपने फिर से फिल्मी सफर पे ले जाएंगे। मूवी जो उनकी मर्जी होगी। It doesn't matter. That's Manish's charm. He can talk about any movie that he wants to. जाइएगा मत। It's We'll a be screen back stealer. to review his review, लेकिन आप लोग जाइएगा मत। Watch फिल्मी सफर। Filmy Safar. It's the most beautiful feeling in the world. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष और हम शुरू करेंगे आपका फिल्मी सफ़र। मैं हूं आपका होस्ट, लोग होस्ट और दोस्त भी कहते हैं, पर दोस्तों को आई थिंक टू वे स्ट्रीट होती है, लोगों को जानना भी पड़ता है एक दूसरे को। अनफॉर्चुनेटली आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैमरे को जानता हूं और एक स्क्रीन को जानता हूं, पर उसके थ्रू फिर भी मैं आपका होस्ट हूं। होपफुली अगर आप मुझे ईमेल करेंगे हमारी ईमेल एड्रेस पे नीचे और कमेंट्स भेजेंगे और थोड़ी कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद हम फिर उसके बाद दोस्त भी बन सकते हैं। एनीवेज, लॉट ऑफ ब्लैबरिंग ऑन माय पार्ट नॉर्मली डज हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ अ शो, समटाइम्स नॉट। ये मुझे हारून और अब्दुल्ला का ना थोड़ा सा फीवर आने लग जाता है, उनकी जो थोड़ी सी बीमारियां ना वो मेरे सेगमेंट की तरफ भी आ जाती है। तो उनके लिए मैं एक्चुअली उनको थैंक पहले करना चाहता हूँ उनके इंट्रोडक्शन के लिए और उनके वेलकम के लिए, उनकी बहुत अच्छी बातों के लिए जो मेरे बारे में वो कहते हैं या ना भी कहते हो। आज हम बात करेंगे एक फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ inquisitivity to my mind and kept me glued to the screen. And it was fun because I was able to watch it at home in my own comfort with my own popcorn or my candies or whatever I do want to have. That film is Drishyam Part 2. Drishyam was a movie that earlier came out as a Part 1 some years ago. Again, it was a suspense thriller, which I believe a lot of people saw. Star Ajay Devgan. Tabu was also in there. She played a very, very pivotal role in the film, which she always does. हमारे जो अब्दुल्ला जो हैं उनकी जो बहन है तबू, बहन, sister, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। Anyways, coming back to Drishyam 2, amazing film. This film brought what it brought as a feeling to me was that same thing, that when you go in to watch a film, you go in for entertainment, you want to get lost, and you want to not feel that a moment that you spent in that position, in that place, in that time that you spent with the box or in the theater, that it was wasted. And Drishyam 2 definitely brings you that satisfaction. You watch the film like the first one that you do, that as much as you know that somebody is being able to follow a certain pattern in a story that creates predictability. आपको पता है कि मुझे पता है क्या होगा आगे, but फिर भी आपके पता होते हुए भी कुछ और होता है. That is Drishyam 2. आप और हर बंदा अलग तरीके का सोचेगा कि ऐसे होगा वैसे होगा, पिछली फिल्म का रेफरेंस लेगा, किसी और फिल्म का रेफरेंस लेगा, या किसी कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, उसका एक्सपीरियंस लेगा कि आगे शायद ये इंसान करेगा, because at the end of the day, characters are based on human beings. This film is, I believe, also based on a novel. I don't think it's a true story, unfortunately. मैं इतना research junkie नहीं हूँ, but it could be. I mean, there are people like this out there that are very intelligent and very clever and can be able to figure out a lot of things in many different ways that normally we can't. But उसको एक subtlety से करना, एक क्या कहते हैं, एक शांति से पर फोकस तरीके से करना, वो उसकी परफॉर्मेंस अजय देवगन ने दी है। अजय देवगन जो ऑब्वियसली हमारे एक्शन हीरो हैं, स्टंट्स करते हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने डिफरेंट की करी हैं, you know, regardless of how he's been criticized about his looks, he definitely has come up towards being one of India's greatest actors. Also producers, director, I think he's directed a few films also. He's coming out with another one जो उनकी आने वाली है. But again, जो उन्होंने अपने normalcy के जो एक कैरेक्टर से उन्होंने इस कैरेक्टर को अपनाया है और जैसे ओन किया पहली फिल्म से इस फिल्म तक लेके, I think it's amazing. I mean, though you do see a little bit more of a different side of his character in Drishyam 2 compared to Drishyam 1,
but you will still see the solitude and the calmness and a very direct approach as a father who wants to protect his family at all costs and will do whatever it takes. कई लोग वो धाड़ मार के या गुस्से से अपनी प्रोटेक्शन दिखाते हैं और कई लोग अपना दिमाग लगा के दिस ब्रेन एंड ब्रॉन सो इसमें ब्रेन का इस्तेमाल काफ़ी किया गया और इसमें एक सीख और बड़ी एक इम्पोर्टेंट लेसन भी दिया गया कि जो बात आप नहीं चाहते किसी को पता हो वो किसी को भी मत बताओ, चाहे आपको कोई कितना प्रेशर करे, कोई कितना आपके ऊपर वो प्रेशर डाले कि मुझे बताओ मैं आपके इतने क्लोज हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, बीवी हूँ, माँ हूँ, बच्चा हूँ, मिस्ट्रेस हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, जो भी हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, मुझे बताओ कि एक ट्रस्ट फैक्टर है. I think that's one lesson that I know I got out of this film that I heard about, and it's very, very true. I didn't realize it till I actually heard it from someone else. One of the young gentlemen that is here, who's very intelligent, who's actually part of producing the show. So he came up with this, and I was just like, it's brilliant. It's so true. It's not about the fact कि आप किसको बता रहे हो, कि ये नहीं कि चलो ठीक है, बीवी को बता रहे हो या किसी और को बता रहे हो. It can be a fun factor, but the reality of it is that you can only trust yourself. I think that's one of the lessons that I took out of this film, that you can only trust yourself, and why not? You have to trust yourself. अगर आप खुद ही capable हो कुछ करने का, तो अपने आप को उस हिसाब से आप trust भी कर सकते हो. Miss Salgaonkar was the actress. She did a very, very good character as a wife, and she played it was very natural, the fear factors in her life in terms of how it could be and how a wife would want to think she's protecting her family in a certain way, mother protecting her kids in a certain way. But yet again, trying not to spoil the film for you if you haven't seen it yet, but you do need to see the chemistry between the husband and the wife and the children. Very, very interesting. The twist in this film was Akshay Khanna. Akshay Khanna came as he's I believe the IG police of that area, and comes in, guns blazing, just kind of scare these people into remission, into acceptance of something, which of course from the first film we know that they didn't do. Of course not. उन्होंने थोड़ी कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया. सब innocent है, सब अच्छे हैं. But Akshay Khanna brings a good little twist. I think after a long time he came in, naturally, अपने natural hairstyle के साथ आए, which was good to see that, वो कुछ carpet लगा के नहीं आए this बार. I'm sorry, Mr. Akshay Khanna, if that offends you, but it looked good. Your natural look, I think, worked for this film, especially worked for this character. And of course, हमारे अब्दुल्ला दोस्त की बहन ताबू जी का कौन जिक्र नहीं कर सकेगा, बार. Stunning woman, stunning actress. I think she's definitely the definition of a human in fine wine who only gets better with age and gets better with time. She's been phenomenal from films like Bhool Bhulaiya Part 2 to doing a film like this one, and then I believe another film of hers is coming, Bhola, with Ajay Devgan again. So their chemistry obviously is getting more and more popular as friends, as foes, as co-actors, whichever it may be, but it's working. It's working for us. It's working for you. It's working for me, and it's making us. Sorry, I shouldn't have done that. I did that. I just wanted to make sure I'm not going over my time. But, anyways, wanted to give you a little brief on it. Definitely watch Drishyam. Definitely go check it out. It's on Prime, I believe. आप घर पे बैठ के आराम से भी देख सकते हैं. That's really good. अगर थिएटर आपके आसपास कहीं लगी हुई है, definitely थिएटर का मजा है. Of course, कुछ हो रहा है, थोड़ा पॉपकॉर्न, थोड़ा कोक, थोड़ी मस्ती, कभी-कभी सीटियां आजकल तो बजने लगी हैं. Especially हमारे यहाँ पे कनाडा में तो मैंने नोटिस किया थोड़ा इंडिया वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा बनता जा रहा है. इंडिया में थोड़ा कनाडा वाला एटमॉस्फेयर ज़्यादा बनता जा रहा है. So anyways, on that note, I will thank you all for joining me again on Filmy Safar, and definitely if you get a chance, watch Drishyam too. And if you have any comments, concerns, our email address is always written below for to hear from you. और जैसे मैंने कहा, दोस्त बनना चाहें तो दरवाज़ा हमेशा खुला. I look forward to it. Thank you so much. Enjoy the next segment, everybody, and I look forward to you next time on Filmy Safar. दृश्यम 2 यार, ये तो नाम ही इतना पावरफुल लगता है मुक्का मार दिया दृश्यम. तुमने वो फर्स्ट वाली मूवी देखी? मैंने दूसरी वाली नहीं देखी जिसका भी रिव्यू हुआ है, मनीष ने जो किया, लेकिन आई सॉ द फर्स्ट वन. और अभी मैंने रिसेंटली क्रिसमस की ब्रेक पे देखी थी फिर से. अच्छा, आई सॉ इट अ लॉन्ग टाइम अगो. नहीं, क्योंकि इसका बहुत शोर शराब, यार, there's a lot of shore for that movie, for the second one, Drishyam 2. So Manish is going to fill us in about that, but I'm hearing great reviews about it, and fantastic work, great gripping story. So नहीं, कास्ट भी it's a powerful cast. अजय देवगन, तब्बू बाजी कहता हूँ मैं. She's related to me. She's my would you stop elder that, sister. Well, Dilip Kumar was my second my uncle. third cousin. He's my mamu.
नहीं वो दिलीप कुमार तो वो मेरे मामू के जो चाचा थे ना, हाँ, उनके उनकी भांजे का जो बेटा था, उनके जो वो रेलवे पे जो वहाँ उनकी काम करते थे ना, उनकी वो वालदा का वो जो हाँ, दादी थी, उनसे रिलेटेड उनसे रिलेटेड थे वो। सही, मतलब खून का रिश्ता है, बहुत बहुत डायरेक्ट बहुत किस्म का गाढ़ा एक खून। रिश्ता है। हाँ, बहरहाल that was an amazing review Manish, thank you for that. आप लोग भी जाके देखिएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि when I saw the first one I was gobsmacked man। वो जो एंडिंग में जो उन्होंने दिखाया है ना कि वो पुलिस स्टेशन के ऊपर से ही चलता हुआ जा रहा है। नहीं यार, It was like a Drishyam. It was just a very well written movie. Yeah. No, it was very almost Hollywood like. Not very Pathaan like, you know what I mean? हाँ, और एक्टिंग अच्छी थी। अजय देवगन जो है अक्सर बहुत thought I'd throw that in there. ज़्यादा चीखता है, लेकिन उसमें he was very subtle. No, Ajay Devgan doesn't scream much, man, does he? हाँ, वो सॉरी वो सनी देओल है। Sunny, no, Sunil Shetty. हाँ, क्या है? ओ भाई। चलिए हम शो बात करते हैं। Anyhow, बहुत मजा आया आप लोगों को, हमने फिर से एंटरटेन किया, कोशिश की, नाकाम कोशिश करते रहते हैं हम फिर से आएंगे आपको दोबारा तंग करने। हम बहुत ही the humility in us is incredible. We're very जाइएगा humble मत, people. अगले हफ्ते we will be back with दो मस्ताने presented by Ocloo. Ocloo. Do Mastane is presented by Ocloo Reimagine Entertainment.